Which practical? Okay, so logistic regression is done, right? Okay. Let us begin the sixth practical today. So let me share the screen. Right, so your sixth practical is implementing k nearest neighbors, support vector machines, naive Bayes classifier. All right. Um, so let me open up the practical. Yeah. Okay. So this is not actually the complete sixth practical. This is only k nearest neighbors, but I'll still let you know what I have done here. Okay. So like always, first import the Google Drive. Go to the datasets folder. Right. Then import pandas. Then I'm using the glass classification dataset. Okay. And this is our data. Right. The target variable is this type. So we have 7 different types of glasses. Okay. Based on the chemical contents and other attributes for this particular for each particular glass. Okay. So I have written df type dot unique and it is showing me all the unique values, right? So the values are ranging from 1 to 7, right? So I said then y equals to df type, and then I said y dot head. That is fine. Then I have denoted x as all the other columns except for type. So now we have our x and y. Then I did the x train, x test, y train, y test split. Okay, just like we have done this before in other practicals. I verified x train, x test, y train, y test, whether they are same or not. Okay, then here is where our practical starts. Okay, so from sklearn.neighbors, I have imported k neighbors classifier. Okay, now do not mistake this. There is another, another module available in sklearn, and that is something like from sklearn.neighbors. ये वाला नहीं करना है, ठीक है? This is wrong.
ठीक है, के नेबर्स क्लासिफायर करना है आपको. You do not have to import nearest neighbors because nearest neighbors will only find the nearest neighbors. Okay, it will not actually classify your data set. Okay, so you need to import the k neighbors classifier. Okay, please keep this in mind. Right, so then I have written actually this function here. Okay, and because k neighbors classifier, क्या आपके क्लास में लेक्चर चल गया इसका, इस चीज का? कोई बता सकता है इसका लेक्चर चला है कि नहीं चला है? के नो नियरेस्ट नेबर्स का ओके, लेक्चर नहीं चला है. सर, मतलब अभी ये टॉपिक आएगा. ओके, अभी तक आया नहीं है. ओके, सो इन दैट केस लेट मी give you a brief overview of what k nearest neighbors is. Okay, yeah, okay, so I'll show this particular video. ऑडियो आपको आएगा नहीं, लेकिन where is the video? Okay, okay, and it is a non-parametric method. Okay, used for classification and regression, meaning does not take any underlying assumptions about the distribution of data. So let m be the number of training data samples, मतलब number of rows, and let p be an unknown point, मतलब एक particular row. Okay, so m is total number of rows, p is single row. Okay, so what we are doing, okay, we are storing all the training samples, मतलब all the rows in a array of data points. Okay, so each row is one data. Okay, then we are calculating Euclidean distance of all the other points from our current point p, okay, which is unknown. Okay, then what we are saying, we are calculating the distance. Then we are saying make set S of k smallest distances obtained. Okay, मतलब हमारा पॉइंट P है जिसका हमको क्लास पता नहीं है. ठीक है, सपोज करो कि हमारा डेटा सेट है और कैट एंड डॉग वाला डेटा सेट है. ठीक है, और करंटली पॉइंट P है, वो पता नहीं हमको कि कैट है या डॉग है. तो हम क्या करेंगे कि P का डिस्टेंस हम बाकी सारे रोज से या बाकी सारे पॉइंट से कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, फिर स्मॉलेस्ट के डिस्टेंसेस देखेंगे हम, मतलब ये पॉइंट से सबसे नजदीक वाले के पॉइंट कौन से हैं, तो उसका एक सेट बनाएंगे. फिर ये सेट में मेजॉरिटी क्या है, कैट है या डॉग है. अगर मेजॉरिटी कैट है तो हम पी को भी बोल देंगे कि पी भी कैट है. अगर मेजॉरिटी डॉग है तो हम पी को भी बोल देंगे कि पी डॉग है. ठीक है, तो दिस इज बेसिकली द के नियरेस्ट नेबर्स एल्गोरिथम. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास पैरामीटर्स क्या क्या है. ओके, so what are the parameters? This is a non-parametric method, right? So the only parameter is k. कि कितने पॉइंट्स का हमको सेट बनाना है, मतलब हाउ मेनी पॉइंट्स डू वी वांट टू कंसिडर व्हेन वी आर टेकिंग द वोट. ओके, मेजॉरिटी वोट. ठीक है, तो मतलब सपोज करो कि टोटल नंबर ऑफ रोज 100 है, तो इन दैट केस आई थिंक नियरेस्ट 3 points or nearest 4 points would be best. Okay, so k equals to 3 or k equals to 4 would be the best case scenario and it will give us the best accuracy. लेकिन हमको पहले से तो पता नहीं है, ठीक है, कि कौन सा k बेस्ट है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि मल्टीपल के अलग अलग k की वैल्यू लेंगे और अलग अलग बार हम एल्गोरिथम रन करेंगे. पहले k equals to 3 लेंगे,
फिर कुछ हमको रिजल्ट आएगा, कुछ एक्यूरेसी आएगा, फिर k इक्वल टू 4 लेंगे, फिर पूरा एल्गोरिथम ट्रेन करेंगे और कुछ एक्यूरेसी आएगा, फिर k इक्वल टू 5 लेंगे, वापस से एल्गोरिथम ट्रेन करेंगे एंड सो ऑन. Okay, then we will choose finally the best k, that means the k which gives us the best accuracy. वो वाला k हम सिलेक्ट करेंगे. okay? और वो k सिलेक्ट करने के लिए यूजुअली एक एल्बो मेथड भी यूज किया जाता है, जो मैं आपको बताऊंगा कि क्या है. ठीक है. यूक्लिडियन डिस्टेंस इज उसका फॉर्मूला है. ठीक है, 2 पॉइंट है p एंड q, तो उन दोनों के बीच का यूक्लिडियन डिस्टेंस क्या होगा. सपोज करो p इज डिफाइंड एज पॉइंट p1 p2, ओके, एंड q इज डिफाइंड एज पॉइंट q1 q2. तो p और q के बीच का डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे. p1 माइनस q1 होल स्क्वायर प्लस p2 माइनस q2 होल स्क्वायर और पूरे का रूट, दैट विल बी यूक्लिडियन डिस्टेंस. So let me show you the diagram. Okay, so this is what we want to consider. अभी ये पॉइंट है अनक्लासिफाइड, उसके सबसे नजदीक वाले पॉइंट सारे ग्रीन है, तो ये भी ग्रीन होगा. ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला ट्राइंगल, उसके नजदीक वाले पॉइंट सारे रेड है, तो ये वाला पॉइंट भी रेड होना चाहिए. ओके, सो दिस इज द हाइपोथेसिस बिहाइंड k nearest neighbors. Right, so what have I done here? मैंने from sklearn.metrics f1 score import किया, because f1 score is a performance evaluation metric for classification algorithms. Okay, for regression algorithms performance metric क्या रहेगा. mean absolute error, MAE, root mean squared error, RMSE, and so on. Okay. Then I'm saying number of neighbors equals to I for I in range 2, 20. मतलब number of neighbors is going from 2 to 20. Okay. Then I'm saying for I in range 220, nay, okay, or I could say our model. Here also I'll say model. Same thing here. Okay. So our model equals to k neighbors classifier, number of neighbors equals to I. तो ये लूप में डाला हुआ है मैंने, तो I पहले 2 होगा, ठीक है, फिर लास्ट में 20 होगा. ओके, सो k इक्वल्स टू I रख दिया हमने. so this n number n underscore neighbors, this is nothing but k. ठीक है, और फिर दूसरे बहुत सारे इसके पैरामीटर्स है ये k नेबर्स क्लासिफायर के, जो आपको डॉक्यूमेंटेशन में से पढ़ने पड़ेंगे कि उनका मतलब क्या है और क्या होता है. ठीक है. देन आई एम सेइंग मॉडल डॉट फिट एक्सटेंड y train. Okay, then I'm saying ypred equals to model dot predict x test. ठीक है, तो predict जो है वो हम x test पे करेंगे obviously. Fine. Then I'm saying f1 dot append. So this f1 is an empty list. तो इस लिस्ट में हम क्या append कर रहे हैं, f1 स्कोर append कर रहे हैं. किस चीज का, y test, ypred and average is weighted average. Okay, तो हम x test पे predict किया, उसके ऊपर से हमको ypred मिला. तो ypred और y test के बीच में कितना डिफरेंस है वो हम f1 स्कोर अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, और वेटेड एवरेज देख रहे हैं, ताकि हमको पता पड़े कि f1 स्कोर क्या है फॉर ईच i, फॉर ईच k. ओके, so as this loop will go from 2 to 20, k will change from 2 to 20. Okay, so we are training 19 different models. Okay, 19 different machine learning models. For each model we are calculating the fn score and appending it to this list. Okay, and then I'm saying the f1 score when number of neighbors is this is equals to this, और बाद में डॉट फॉर्मेट करके मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ. ठीक है, so I ran this loop. Okay, so now the f1 score when number of neighbors is 2 is this, the f1 score when number of neighbors is 3
is this, okay, and so on up to 20. तो up to 19, 20 वाला कैलकुलेट नहीं कर रहा हो. अभी F1 स्कोर जितना 1 के नजदीक होगा उतना अच्छा मॉडल हमारा परफॉर्म कर रहा है. ठीक है. F1 स्कोर जितना 0 के नजदीक है उतना बुरा हमारा मॉडल परफॉर्म कर रहा है. तो यहाँ पे बेस्ट वैल्यू के की आपको क्या लग रही है? बेस्ट वैल्यू नंबर ऑफ नेबर्स की. ओके, तो हम इसको प्लॉट कर सकते हैं. ठीक है, इसको हम प्लॉट कर सकते हैं. तो हमारे पास F1 नाम का लिस्ट है. ठीक है, और हमारे पास n नंबर नाम का लिस्ट भी है. तो ये दोनों लिस्ट को हम प्लॉट कर देते हैं. ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे matplotlib.pyplot_splt इंपोर्ट किया, एंड देन आई सेड सिंपली plt.plot number of neighbors and F1. Okay, so on the y-axis we have the F1 score, on the x-axis we have the number of neighbors. Okay, so k on the x-axis. So you can see that the best value for F1 score is around 0.61. Okay, and it is when k equals to 4 and k equals to 16. दो केस में हमको बेस्ट F1 स्कोर मिल रहा है. अभी तो फिर दो केस में मिल रहा है तो के क्या चूज करना चाहिए हमको हमारे मॉडल के लिए? तो वी शुड ऑलवेज सी कि हमारे पास डेटा कितना है. अगर हमारे पास बहुत ज्यादा डेटा है तो हम k इक्वल टू 16 रखेंगे, क्योंकि द हायर द वैल्यू ऑफ k द मोर कॉम्प्लिकेटेड अवर मॉडल इज. ओके, द लोअर द वैल्यू ऑफ k the less complicated and more simple our model is. Okay, so always go for simpler model. Okay, don't make your model complicated, otherwise it is going to overfit. Okay, तो यहाँ पे मैंने df.describe से देख लिया कि हमारे पास डेटा कितना है. तो खाली 214 रो है, only 214 rows. So in that case I'll probably choose k equals to 4 because that is a simpler model and amount of data we have is only 214 rows. Understood what I have done? Do you guys have any doubts? Please ask. Understood. Okay, any questions? तो k नियरेस्ट नेबर्स आई हैव टॉट यू. कि इसके बाद हम SVM देखेंगे. ठीक है, और नेक्स्ट लैब में हम नाइव बेस देखेंगे. फाइन. सो राइट नाउ प्लीज परफॉर्म k नियरेस्ट नेबर्स, KNN परफॉर्म करो. आफ्टर हाफ एन आवर आई वंस अगेन आस्क एवरीवन कि आपका इंप्लीमेंटेशन कहाँ पहुंचा. उसके बाद हम SVM स्टार्ट करेंगे. ओके. Yes, sir.
code. Okay, I simply went to runtime and then I did run all. So this time we are getting different results because the train test split was done differently, because train test split is done randomly, right? Okay, so since the train test split was done in a different way than it was done the last time, this time the results we achieved were also different. Okay, so this time we achieved higher F1 score, the highest F1 score for k equals to 2. Okay, and then as the value of k increased, the F1 score decreased. Okay, so this is the plot now. Okay, so the best k we are getting is this one, 2, k equals to 2. K equals to 3 is also a good score. Okay, which is 0.7, near about 0.73. K equals to 2, we are getting F1 score equals to 0.75. Okay, so you can either choose k equals to 2 or k equals to 3. But I think even though for the test set, we are getting a lower k score for k equals to 3, we should actually choose k equals to 3. Okay, because we don't want too simple a model. All right. So am I being clear? Sorry, can you please repeat it? Okay, so once again, हमने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट जो पहले किया था वो अलग था, मैंने फिर से रन किया, इस बार अलग ट्रेन टेस्ट स्प्लिट हुआ. ठीक है, तो एक्स ट्रेन इस बार अलग है, एक्स टेस्ट अलग है, वाई ट्रेन अलग है, वाई टेस्ट अलग है. तो वापस से मैंने हमारे मॉडल को फिट किया. ठीक है, इस बार एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन अलग है, राइट? एक्स टेस्ट अलग है, वाई टेस्ट अलग है. Therefore, this time we received different F1 score. Okay, because basically our algorithm, which is the KNN machine learning algorithm, was trained on different data. Okay, since X train and Y train, X test and Y test itself are different, the training was done on different data. Therefore, the F1 score we received was different this time. Previously क्या हुआ था कि highest F1 score हमको around 0.67 जितना मिला था for k equals to 4. ठीक है, लेकिन इस बार हमको हाईएस्ट F1 स्कोर है वो k equals to 2 मिला है. तो ये हो सकता है क्योंकि हमारा डेटा चेंज हुआ है. ठीक है, रैंडमली स्प्लिट हो रहा है ना. ठीक है, तो पहले ये जैसे कि रो नंबर 130 है वो एक्स ट्रेन में है, तो पहले ऐसा भी पॉसिबल है कि पहले ये वाला रो जो है वो एक्स टेस्ट में हो, एक्स ट्रेन में ना हो. ठीक है, दैट इज व्हाई आई एम गेटिंग अ डिफरेंट रिजल्ट दिस. इफ आई रन इट वंस अगेन, मैंने वापस से रन करूंगा ना तो वापस से अलग आएगा. ठीक है, वापस से रन किया. So okay, so you see the result are different this time. This time the highest F1 score we are getting is k equals to 3.70. Okay, और हमारा ग्राफ भी अलग है इस बार. So this is the highest value we are getting this time. Okay, so every time you do train test split is going to be done randomly. Therefore, our algorithm is going to be trained on different data. Okay, and therefore we are getting different results. Are you understanding? Yes, sir. Okay. So after k nearest neighbors, the next algorithm is support vector machine. Okay. So from sklearn.svm, I've imported linear SVC. Okay. So there is also another algorithm called simply SVC. Okay. Or CSVC and so on. But we are going to be using this one, linear SVC. So SVC stands for support vector classifier. Okay. So this is a very basic support vector machine. There are different kinds of support vector machines. Okay, but we are using this one. Then we are saying SVM classifier equals to linear SVC. We are showing SVM classifier dot fit x train y train. Similarly, ypred जो पहले किया था वही किया वापस से. Ypred equals to classifier dot predict x test. फिर F1 score equals to F1 score y test and ypred. The average is weighted. So the F1 score we are getting for this support vector machine is 0.51, which is less than what we are getting for KNN. Okay, so KNN is performing better than this particular SVM. ठीक है, अभी लीनियर एसवीसी है, उसमें बहुत सारे हम बोल सकते हैं कि पैरामीटर्स है. सो वन ऑफ द पैरामीटर्स इज दिस, मल्टी क्लास में कौन सा टाइप का फंक्शन ट्रेन करना है. ठीक है, तो ये वाला मैं कमेंट आउट कर देता हूँ. ठीक है, और ये अनकमेंट कर देता हूँ. सो
बाय डिफॉल्ट मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन करना है अगर हमको सपोर्ट वेक्टर मशीन में, तो यूजुअली कैसे किया जाता है कि वन वर्सेस रेस्ट मेथड में यूज किया जाता है। ठीक है, तो अब ये वन वर्सेस रेस्ट मेथड क्या है? तो सपोज करो कि वी ओनली हैव टू क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, ओके, कैट एंड डॉग। ठीक है, तो ये टू क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम हुआ। तो टू क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में क्या है कि या तो हमारा पॉइंट जो है डेटा पॉइंट वो कैट है या तो डॉग। ठीक है, देर आर ओनली टू पॉसिबिलिटीज। बट यहाँ पे हमारा डेटा सेट कौन सा है? ग्लास क्लासिफिकेशन डेटा सेट, जिसमें टाइप ऑफ ग्लास है वो 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लास है, 1 से लेकर 7 तक। ठीक है, तो हम इसको ट्रेन करेंगे ना तो हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। वन वर्सेस रेस्ट मेथड से भी कर सकते हैं, या ये वाला जो मेथड है क्रेमर सिंगर मेथड, उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट वन वर्सेस रेस्ट मेथड यूज किया जाता है। तो वन वर्सेस रेस्ट मेथड में क्या होता है कि कोई भी एक पॉइंट ले लो, पहले हम एक पर्टिकुलर क्लास ले लेंगे। ठीक है, सपोज करो कि कैट डॉग नहीं है, कैट डॉग हॉर्स काउ 4 क्लास है। ठीक है, तो जब हम कैट के लिए ट्रेन कर रहे हैं हमारे एल्गोरिदम को, तब हम क्या करेंगे कि या तो हमारा पॉइंट कैट है या नॉट कैट है। ठीक है, हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि या तो हमारा पॉइंट कैट है या डॉग है या हॉर्स है या काउ है, ऐसा नहीं। या कैट है या कैट नहीं है, दैट्स इट। सो इफ ईदर इट इज कैट एंड इफ इट इज एनी ऑफ द अदर 3 क्लासेस इट इज नॉट कैट। तो ऑब्वियस सीधा सीधा टू क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो गया हमारा प्रॉब्लम। ठीक है, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में से टू क्लास क्लासिफिकेशन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, 4 क्लास की बजाय हमारे पास अभी खाली 2 क्लास बची है, कैट एंड नॉट कैट। सिमिलरली हम अगर हॉर्स के लिए ट्रेन करेंगे तो हॉर्स नॉट हॉर्स, डॉग के लिए डॉग नॉट डॉग। दिस वे वी आर ट्रेनिंग द एल्गोरिदम फॉर ईच क्लास। ओके, so this is known as the one versus rest method when training machine learning algorithms for multi-class classification problems. Okay, तो यहाँ पे मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में वन वर्सेस रेस्ट मेथड नहीं यूज कर रहे हैं, एक क्रेमर सिंगर मेथड यूज कर रहे हैं। ये मेथड क्या है ये आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, बट दिस इज जस्ट पार्ट ऑफ the sklearn library and they are providing this method. Okay, तो हम सिंपली यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ और चेक करते हैं कि हमारा F1 स्कोर चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, ओके, सो वी आर गेटिंग अ बेटर F1 स्कोर विच इज 0.61। ओके, यही चीज वापस से रन करूंगा ना तो भी अलग आएगा, 3.59। तो एवरी KNN के लिए भी सेम चीज है, एवरी टाइम यू ट्रेन इवन ऑन द सेम डेटा तो भी आपको अलग रिजल्ट मिल सकते हैं। ओके, तो दिस इज वाई क्या होता है कि मॉडल्स इनिशियलाइजेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्या आप इनिशियल स्टेट क्या है, तो हमारा एल्गोरिदम इनिशियल कहाँ से स्टार्ट कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा फाइनल एक्यूरेसी क्या होगा। तो प्रैक्टिस में क्या किया जाता है, इंडस्ट्री में प्रैक्टिस में क्या किया जाता है कि मल्टीपल टाइम्स रन किए जाते हैं मॉडल्स, और जैसे ही प्रीवियस बेस्ट से न्यू बेस्ट मॉडल मिलता है ना तो उस मॉडल को सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो मॉडल सेव कैसे करना है ये मैं बाद में सिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, यूजुअली पिकल लाइब्रेरी यूज किया जाता है पाइथन का। ठीक है, तो पाइथन पिकल, सो दिस इज द लाइब्रेरी दैट इज यूज्ड टू सेव मॉडल्स। ओके, तो मैं आपको बता ही देता हूँ, चलो sklearn save model pkl. Okay, so pkl is the extension for pickle. यहाँ पे sklearn के डॉक्यूमेंटेशन में ही सीधा सीधा जाते हैं। ओके, so now what we can do, we can import pickle. So let me add code here. Okay, import pickle. ठीक है, उसके बाद क्या करना है, you have to say s equals to pickle dot dumps dump s. Okay, so our classifier. Okay, so here our classifier is this svm underscore cls. Okay, तो इसको रिप्लेस कर देंगे हम। ठीक है, तो क्या होगा कि हमारा पिकल सेव हो जाएगा इन आवर एस ऑब्जेक्ट।
ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम हमको जब भी लोड करना है तो हम क्या कर सकते हैं, CLF2 इक्वल्स टू pickle dot load s and s. Okay, this can be anything. Okay, saved model. Okay, I can say something like this. Okay, so saved model is this. Fine, we can simply do this. तो हम सेव भी कर सकते हैं और लोड भी कर सकते हैं. ओके, so dump s will save the model and load s will load the model. ओके, तो क्या किया जाता है कि जैसे ही अच्छा F1 स्कोर मिला ना, तो उसको पिकल सेव कर देते या H5 के फॉर्म में सेव कर देते. ठीक है, ओके, दूसरा टाइप यहाँ दिया नहीं हुआ है, तो मॉडल को आप H5 के फॉर्म में भी सेव कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन यहाँ पे पिकल इजी रहेगा थोड़ा हमारे लिए, इसलिए मैंने पिकल यूज किया है. इज दैट क्लियर? सर इसमें सिर्फ एक मॉडल से हो गया या फिर मल्टीपल मॉडल से हो सकते हैं? अगर दूसरा मॉडल सेव करना है तो आपको सेव्ड मॉडल 2 ऐसे करके सेव करना. ओके ओके. ठीक है, इसमें तो एक ही मॉडल ये वाला सेव होना. So this was about support vector machine. Now let us go to naive Bayes classifier. ठीक है, तो naive Bayes classifier में भी सेम चीज है. From sklearn.naive Bayes we have imported Gaussian naive Bayes. So there are different kinds of naive Bayes. Okay, तो कौन से टाइप के हैं? बर्नौली naive Bayes, कैटेगोरिकल naive Bayes, मल्टीनोमियल naive Bayes, Gaussian naive Bayes. तो हम हमारे सिलेबस में Gaussian naive Bayes है, तो Gaussian naive Bayes यूज करें. ठीक है, so simply imported Gaussian naive Bayes. Then I'm saying GNB equals to Gaussian NB. Then GNB dot fit x train y train. Y parade equals to GNB dot predict x test. GNB F1 score equals to F1 score y test y parade average weighted, and simply printing the F1 score for our Gaussian naive Bayes classifier. Very simple, right? Same process for all models. पहले फिट करो, फिर प्रेडिक्ट करो, फिर F1 स्कोर कैलकुलेट करो. इन केस रिग्रेशन प्रॉब्लम है तो F1 स्कोर की जगह क्या आएगा? रूट मीन स्क्वेयर्ड एरर आएगा. ठीक है, इंस्टेड ऑफ F1 स्कोर. तो यार द F1 स्कोर फॉर दिस गॉसियन naive Bayes is 0.569. वापस से रन करके देखते हैं, सेम स्कोर आया. सो गॉसियन naive Bayes में क्या आएगा? फिक्स्ड रिजल्ट मिलेगा. ठीक है, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटीज पे काम करता है naive Bayes एल्गोरिथम जो है वो. That is why you'll almost get the same result every time you run the algorithm. But support vector machine और KNN में जरूरी नहीं है कि आपको जो लास्ट टाइम आपका रिजल्ट आया था वही रिजल्ट वापस से आए. Okay, so please let me paste this in the comment section. Okay, so you have linear SVC and the next one is Gaussian NB. Okay, so you can take a look at these documentation when you are free and on your own. Okay, so please perform the rest of the practical in the rest of the lab. ठीक है, and do not leave the meeting. 11 में 5 कम को मैं चेक करूंगा आपका वर्क क्या है, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप तब पूछ सकते हो. ठीक है, okay, please start working.
Thank you. Thank you, sir.